अब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Fundamental duties in Indian Constitution are inspired by Constitution of erstwhile USSR Union of Soviet Socialist Republics. These duties were incorporated of Indian Constitution based on recommendation of Swarna Singh Committee 1976. किसने recommend किया था? Swarna Singh Committee को, which was set up in Indira Gandhi government during emergency period 1975 to 77. Swarna Singh Committee which was set up by इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पीरियड में सेटअप किया था स्वर्ण सिंह कमेटी को 1976 में. ठीक. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इंट्रोड्यूस्ड पार्ट 4A इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल आर्टिकल 51A इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It introduced Article 4A in the Constitution, which consists of single Article 15A outlining 10 fundamental duties of Indian citizens. अच्छा, 42nd में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ी. फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 में दिस अमेंडमेंट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी. This amendment made the 11th fundamental duty, which made the duty of parents, guardian, to provide opportunity for education to children aged 6 to 14 years. Opportunities for education to children aged 6 to 14 years. Article 15 fundamental duties of citizens. According to Article 15(1)(a), every citizen of India has the following duties. क्या है? रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल एंड कॉन्स्टिट्यूशन. नेशनल सिंबल और कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है. क्लॉज है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल enshrined in the preamble and the constitution. Must follow the principle enshrined in the preamble and the constitution. Respecting the national flag and national anthem symbolizes patriotism and national unity. Respecting national flag and national anthem symbolizes patriotism and national unity. Any act of disrespect towards these symbols is punishable under Prevention of Insults of National Honor Act 1971. अपहोल्डिंग द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये क्लॉज ए था. क्लॉज ए में क्या क्या? नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को वो करना है, मतलब अवॉइड करना है, मतलब इज्जत करनी है. और अगर कुछ भी कोई भी डिसरिस्पेक्ट शो करता है तो उसको सज़ा का हकदार होगा. ठीक. Upholding the ideals of freedom struggle क्या है? क्लॉज बी टू चेरिश एंड फॉलो the noble ideals that inspired our national struggle for freedom. Upholding the ideals of the freedom struggle. To cherish and follow the noble ideals that inspired our national struggle for freedom. Clause B. Citizen must uphold values such as non-violence, democracy, secularism, and unity, which were emphasized during India's national freedom struggle. Protection of sovereignty, unity, and integrity of India. Clause C. To protect the sovereignty, unity, and integrity of India. Sovereignty ensures India's complete independence from external control. Sovereignty ensure करती है. Unity and integrity demand the rejection of secessionist movements or anti-national activities. Secessionist movements क्या होते हैं? Secessionist स्वपक्षत्यागी हैं. अलगाववादी. अच्छा. टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी
एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये क्लॉज सी में है। इंडिया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अच्छा यूएपी एक्ट 1967 यूएपीए was enacted to curb activities that threaten national integrity। ये प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए है। डिफेंस ऑफ ए नेशन क्लॉज डी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सिटीजन मस्ट कंट्रीब्यूट द नेशनल डिफेंस आइदर थ्रू मिलिट्री सर्विस और सिविल डिफेंस। इंडिया डज नॉट हैव ए कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस बट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिटीजन कैन बी कॉल्ड टू सर्व। ठीक। प्रमोटिंग हार्मोनी एंड रिनाउंसिंग social evil, clause E, to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, to renounce practices derogatory to the dignity of women, encourages secularism, encourages secularism and social harmony among diverse communities, addresses gender equality by denouncing practices like dowry, female foeticide, and domestic violence. Important laws: Protection of Women and Domestic Violence Act 2005, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। फिर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज टू वैल्यू एंड preserve the rich heritage of our composite culture. India's cultural heritage include historical monuments, classical arts and languages. UNESCO recognizes several Indian heritage sites such as Taj Mahal, Qutub Minar, etc. ठीक। Clause G, protection of the environment, to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers and wildlife, to have compassion for living creatures। ठीक है। Environment Protection Act 1986 and Wildlife Protection Act 1972 support this duty, protection of environment. Citizens are expected to reduce pollution and protect biodiversity. Scientific temper and rational thinking, clause H, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. Encourages rational thinking, curiosity and innovation, important for eradicating superstition and blind faith। ठीक है। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, क्लॉज आई, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू एडश्योर वायलेंस। एनी एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, आर्सन और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज ऑफेंस। आर्सन मतलब होता है आगजनी, आर्सन आगजनी। वैंडलिज्म मतलब बर्बरता, आर्सन मतलब आगजनी, वैंडलिज्म मतलब बर्बरता। जैसे एग्जांपल, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, क्लॉज जे, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। encourages continuous self improvement in education, research and professional fields। ठीक। 11th, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टूवर्ड्स चिल्ड्रेन एजुकेशन, क्लॉज के, ये 11वां है। ठीक। ये 86th अमेंडमेंट में आया था। हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रेन टू हिज चाइल्ड और what between the age of 6 to 14 years, introduced by the 86th Constitutional Amendment Act 2002, which was led to Article 21A, right to education। फिर right to education act आया कब? 2009 में। makes free and compulsory education a fundamental right। अब आगे सिग्निफिकेंस क्या है? moral obligation, these duties promote discipline and moral conduct among citizens, reinforces fundamental right, they complement fundamental right, part 3, ensuring a balanced citizen centric government, legal enforceability, though not directly enforceable by law, certain laws impose penalties for violating these duties। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लैंडमार्क केसेस क्या है? एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट रूल दैट फंडामेंटल ड्यूटीज शुड बी इन्फोर्स्ड व्हेन नेसेसरी।
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जब जरूरी हो तो उसको इन्फोर्स कीजिए। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में क्या हुआ, इम्फेसिस द ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसको क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब वो किया गया एमसी मेहता में। यूएसएसआर इंस्पायर्ड इंडियाज इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। USSR, USA and UK do not have specific fundamental duties in their constitution but emphasize civic responsibilities. Japan Article 12 states that rights are conditional upon duties. ये जापानी उसमें कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। ये IS प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन, मतलब क्या जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फॉर्म दिस ड्यूटीज़, नहीं। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, नहीं, लीगल ड्यूटीज़ दूसरी होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दूसरी होती हैं। देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है। ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फॉर्म दिस ड्यूटीज़, इनकरेक्ट, क्योंकि द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एज आउटलाइन इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन जस्टिसिएबल in nature, meaning there is no legal enforcement mechanism provided. ठीक, the duties are moral obligations for citizens but do not carry legal penalties or mandates for enforcement through legislation. Hence there is no legislative process to enforce these duties. ठीक, they are correlative to legal duties. Fundamental duties are not correlated with legal duties in a direct or enforceable manner. Legal duties are enforceable by law, whereas fundamental duties serve as guidelines or responsibilities for citizen. ये क्या है, गाइडलाइन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन की, बट देर इज नो specific legal obligation attached to them unless action like violence, vandalism or harm to public property occur. In such cases other law enforces penalties but they are not directly linked to fundamental duties. ठीक, the provisions relating to the fundamental duties in the Constitution of India were added on the recommendation of Swर्ण सिंह कमेटी, स्वराज सिंह, स्वर्ण सिंह रहेगा ये, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी 1976. The Swarna Singh committee was specifically appointed to review the Constitution of India and propose changes, मतलब इनको ये इसलिए किया गया था कि आप रिव्यू कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, बताइए कि क्या चेंजेस लाना है। The committee recommended the inclusion of fundamental duties in the Constitution, leading the 42nd Constitutional Amendment in 1976, which added Part 4A, Article 51A. This inclusion was based on Soviet model of emphasizing citizens' duty. ठीक, other committee बलवंत राय मेहता कमेटी रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म, अयंगर 1857 में। अयंगर कमेटी फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठक्कर कमीशन कंसर्न सोशल रिफॉर्म इन रूरल एरियाज। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कमीशन रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन? स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। ठीक, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया था। Swarna Singh Committee 1976. This committee led by Swarna Singh recommended the inclusion of fundamental duties in constitution as it means to promote social harmony and national integrity. क्या करने के लिए? नेशनल इंटीग्रिटी और सोशल हार्मोनी को बढ़ाने के लिए। इट लेड द 42nd अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 51A इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अशोक मेहता कमेटी 1985 या 87 में ये बनी थी, राजीव गांधी ने बनाया था। प्राइमरली नोन फॉर इट्स रिकमेंडेशन और पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। बलराम झाकड़, इन्होंने क्या किया देखा जाए, फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। बलराम झाकड़। सरकारिया कमेटी सेंटर स्टेट रिलेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन। Fundamental duties were incorporated in Constitution on the recommendation of Swarna Singh Committee. Swarna Singh Committee 1976 has already discussed. This committee is responsible for recommendation to add fundamental duties to the Constitution under Article 51A in Part 4A.
Shah Commission concerned with examining excessive use of power during emergency 1975 to 77 and not related to fundamental. Administrative Reform Committee primarily focused on administrative reform in India. Santhanam Committee concerned with anti-corruption measures not related to fundamental. Fundamental introduced by 42nd Amendment 1976 as Part 4A of Indian Constitution, Article 51A. There are currently 11 fundamental duties which are moral imperatives for citizens to follow. These duties are non-justiciable, meaning they are not enforceable by law. Article 51A lists the fundamental duties of citizens. These include respecting the Constitution, protecting environment, promoting scientific temper, among others. 86th Amendment Act 2002 added 11th duty, which concerned providing free and compulsory education to children 6 to 14 years. Judicial interpretation. In the case of MC Mehta versus Union of India 1986, Supreme Court emphasized the importance of environmental protection, aligning the fundamental duty to safeguard public property and environment. Article 51AG. Swan Singh Committee's contribution. Swan Singh Committee was pivotal in promoting social and moral responsibility, though fundamental through fundamental duties. It acknowledged the importance of constitutional responsibility for citizens to preserve national unity and contribute the societal development. Comparison with other countries. Unlike many countries, India is unique to formalizing citizen duties within Constitution. In the United States and UK, duties are implied with in legal obligation but not codified in the Constitution. This emphasizes more on rights than the duties. ठीक, तो ये हम लोग का वो करते हैं. बाकी अभी मतलब एक्सरसाइज करके आता हूँ, फिर आगे वो करता हूँ. ठीक, थैंक यू, बाय बाय.